Today we are going to discuss detail about the fertilization and implantation. So in previous class we had discussed detail about the spermatogenesis, how the sperm or male gametes are formed, how the ovum are formed, okay, the process of ovulation, then the menstrual cycle, okay. So after the formation of this male and female gamete, what happened here? When this male gamete along with the semen, okay, it released from this penis and enter into the vagina, okay, by the process of insemination, then fertilization occurs. Okay, how it occurs? This motile sperm, it seem rapidly and pass through this cervix, okay, pass through this cervix, and then it enter into the uterus, and finally it reaches into this ampulla. This is the ampulla junction. Okay, यहाँ तक पहुंच जाता है वो. This ampulla, it is the part of fallopian tube. Here, this ovum also or oocyte, it also released from this ovary, transport through this infundibulum and reaches up to this ampulla. And between this isthmus and ampulla, okay, between this junction here, fertilization takes place. So fertilization can only if the ovum and sperm, they are transport into this junction, isthmo-ampullary junction. And this process of fusion of sperm with ovum, okay, this is known as fertilization. First, during fertilization, what happened? The sperm, this is the sperm, okay, millions of sperm, they get released, okay, and it entered into this female reproductive structure through cervix and through uterus, and it entered into this fallopian tube. And here only one sperm, it comes with contact, okay, it can't contact with this zona pellucida. So this is the zona pellucida. What is zona pellucida? Here it is the outer membrane of ovum. And here this sperm, you know that this sperm, it contains the cap-like structure that is known as acrosome. See here, this is the ovum, and here the millions of sperm, they get attached, but out of which only one sperm, okay, they are able it is able to enter into this ovum. How? Because this sperm, it contained the acrosome, which release one enzyme that is known as lysine, and this lysine enzyme, it destroy this wall of zona pellucida. This is the zona pellucida, the yellowish layer, okay. तो ये लाइसिन रिलीज करेगा, इसको डिस्ट्रॉय करेगा, और इसका जो हेड पोर्शन है वो एंटर हो जाएगा. So once this sperm, it comes in contact with this zona pellucida, then it induces the change in the membrane of this zona pellucida that block the entry of this additional sperm. तो ये एक हेड वो एंटर हो गया, तो उसके बाद वो जोना पेलिसिडा जो मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर वो चेंज हो जाएगा, और बाकी जो स्पर्म है वो एंटर नहीं करेंगे, स्टॉप हो जाएंगे. नाउ द सिक्रेशन ऑफ दिस acrosome, it helps the sperm enter into this cytoplasm of ovum through this zona pellucida, and now it induces the completion of the meiotic division of the secondary oocyte. तो यहाँ से क्या हुआ था? दिस इज द ओवरी, तो ओवरी से ओव्यूलेशन हुआ था. ओव्यूलेशन मीन सेकेंडरी oocyte, ओके, उसको ओवम भी कहा जाता है, बट सेकेंडरी oocyte वो रिलीज हुआ था. बट हमने पढ़ा था वो oogenesis से, जैसे कि प्राइमरी oocyte से म्यूटिक फर्स्ट होगा, सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी, and then the secondary oocyte, it again undergo the meiotic division to form the ovum, and then say again another polar body. तो वो जो ओवम जो है वो यहाँ पे ही फॉर्मेशन होगा. तो यहाँ से सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ था, और सेकेंडरी oocyte यहाँ तक मूव हुआ, ठीक है, यहाँ तक मूव हुआ, और होने के बाद यहाँ पे म्यूटिक सेकेंड डिवीजन कंप्लीट होके ओवम फॉर्मेशन होगा. ओवम फॉर्मेशन कब होता है? जब स्पर्म एंटर होता है, स्पर्म का हेड एंटर होगा, उसका न्यूक्लियस इसमें एंटर हो जाएगा साइटोप्लाज्म में, तब सेकेंडरी oocyte का म्यूटिक सेकेंड डिवीजन होके ओवम फॉर्मेशन होता है. एंड दिस ओवम, it fuse with this sperm to form the zygote. Okay, how this zygote is formed? Here the fusion of male nucleus means sperm cell nucleus,
स्पर्म तो एंटर होगा, बट फ्यूजन किसका हो रहा है, न्यूक्लियस का हो रहा है. तो हियर द फ्यूजन ऑफ स्पर्म सेल न्यूक्लियस एंड एग सेल न्यूक्लियस, ये दोनों न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है. Okay, and they get fused to form the zygote. So here this fertilization it takes place between the isthmus and ampulla. So remember one thing, and that is here fertilization takes place between these junction. Another one, these secondary oocyte they get released, and the meiotic second division it complete when the sperm or the nucleus of the sperm it get entered inside this. Then only here the meiotic second division it occurs to form the ovum. तो यहाँ पे ही वो ओवम फॉर्मेशन होगा. ठीक है, जब वो स्पर्म का न्यूक्लियस एंटर होता है और उसके बाद उस दोनों का फ्यूजन होके वो zygote फॉर्मेशन होगा. So how many number of chromosomes will be there inside this zygote? Obviously 46, because zygote are always diploid. And remember one thing here, this sex determination it takes place during this fertilization, okay, and in the zygote, and here it determined by the sex chromosome present inside this zygote. So you know that this human it contains two sets of chromosome, that is autosome and एलोसोम. एलोसोम मीन सेक्स क्रोमोसोम. तो ह्यूमन में कितना होता है, 46 क्रोमोसोम होगा. 46 क्रोमोसोम होगा if it is diploid. 2n is equal to 46, n is equal to 23. Okay, so here if n is equal to 23, n is equal to 23, then out of which 22 number of chromosome they are known as autosome. उसको ऑटोजोम कहा जाता है. और एक को कहा जाता है remaining one, that is known as allosome or sex chromosome. Likewise, in case of 46, 23 out of this 23 pair means 46. ठीक है, so out of which 22 pair is known as autosome and only one pair is known as sex chromosome. And this sex chromosome, ये जो sex chromosome है one pair जो था, okay, here it is XX in case of female. Sex chromosome means allosome. So it is XX in case of female and XY in case of male. XX means homogeneous. Homogeneous means both the chromosome they are equal in their structure, shape and size. While in case of male that is heterogeneous. Heterogeneous means this X and Y chromosome they differ in their structure, shape and size. तो X chromosome इसका structure थोड़ा सा larger होता है. Y chromosome that is quite smaller than this X chromosome. Look at this. Here is the male. Okay, तो इसमें क्या है 44 प्लस x एंड y. 44 हो गया ऑटोजोम, ओके, और XY हो गया एलोजोम और सेक्स क्रोमोजोम. तो 44 x है 45, y 46, तो ये 46 हो गया. 46 में से 44 ऑटोजोम XY दैट इज सेक्स क्रोमोजोम. ओके, सो दिस इज डिप्लॉयड, ये डिप्लॉयड है. Likewise, here this is female parent, it having the 44 autosome and XX that is sex chromosome. Okay, okay, both are diploid, ये दोनों diploid है. तो इसमें क्या होगा, हैप्लॉइड स्पर्म फॉर्मेशन होगा और इसमें भी हैप्लॉइड एग फॉर्मेशन होगा और ओवा फॉर्मेशन होगा. बट हियर two types of sperms are formed because here X and Y, two types of gametes are there. Okay, means two types of chromosome are there. That's why here two types of gametes are formed. One which contain X chromosome, another which contain Y chromosome. Clear? But here in case of female only one type of gamete is formed. ठीक है, it contains 22 plus X. 22 कैसे हुआ, 44 ये हाफ हो गया 22 प्लस X और एक जो 44 का हाफ हो गया 22, तो इसमें और एक क्रोमोसोम आया Y. ओके, तो इसमें सब सेम ही होगा. 44 का हाफ दैट इज 22 और X का हाफ दैट इज X. Okay, and when this type of sperm it fuse with this egg, then it form again 44 plus XX which is female. And if this egg it fuse with this gamete containing Y chromosome, then it become male. ठीक है, so this is the zygote, these are the zygote. This is the process of sex determination. Okay, after fertilization what happened, cleavage. Okay, cleavage starts. Cleavage means division.
तो इसमें कौन सा डिवीजन होगा? ओनली माइटोटिक डिवीजन होगा। ठीक है। हियर दिस जाइगोट it forms it forms in this isthmus and ampullary junction of oviduct, and first cleavage it occurs in the first 36 hour. So here it form the 2 cell stage, next 4 cell stage, next 8 cell stage, next 16 cell stage. On this process here it is a cleavage. ओके ये जाइगोट हो गया, तो इसमें से फर्स्ट 2 सेल स्टेज फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद हो गया 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज और 8 टू उसके बाद फिर फर्दर डिवीजन होगा माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म 16 सेल स्टेज. ओके सो एम्ब्रियो विथ 8 to 16 सेल ब्लास्टोमियर दैट इज नोन एज मोर्यूला. तो पहले जाइगोट फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद 2, 4, 8, okay, 16 cell, this is known as blastomeres. Okay, so these are blastomeres, and cells with 8 to 16 blastomere that is known as morula, उसको मोरूला कहते हैं. और देखिए इसमें जो जाइगोट का जो साइज है, दिस इज 1 सेट, जाइगोट मीन्स 1 सेट, इसका 1 सेट है, लेकिन इसका जो साइज है एज कम्पेयर टू दिस, जब उसमें डिवीजन हो गया तो सेल्स का साइज भी धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, तो इसमें सेल्स का साइज और डिक्रीज हो रहा है. Now this morula it converted into blastocyst. Okay, this morula it continue to divide and transfer into blastocyst. Here now this blastocyst it moves into this uterus. ओके तो यहाँ तक वो मूव करता है धीरे धीरे, यहाँ से वो 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, ओके 16 सेल मोर्यूला, ओके फिर नेक्स्ट ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन होगा और धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे इम्प्लांटेशन होगा. ओके दिस ब्लास्टोमियर इन दिस ब्लास्टोसिस्ट दे आर अरेंज्ड इनटू outer layer which is known as trophoblast. This outer layer of this blastocyst it is known as trophoblast, and the inner group of this cell, this is the inner group of this cell or inner cell of this mass. Here this trophoblast, here the trophoblast it is attached into this endometrium layer. ये जो layer है ये endometrium layer है, endometrium layer of this uterus का endometrium layer है. तो यहाँ पे क्या होता है, वो अटैच हो जाता है. ओके एंड द इनर मास दे गेट डिफ्रेंशिएट इनटू एम्ब्रियो. ये जो इनर मास है ये धीरे धीरे डिफ्रेंशिएट होके इसमें से क्या फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा. तो ट्रोफोब्लास्ट वो एंडोमेट्रियम लेयर के साथ अटैच हो जाएगा और जो इनर मास है वो धीरे धीरे डेवलप होके एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा. व्हेन दिस ब्लास्टोसिस्ट it embedded in this endometrium layer of this uterus, this is known as implantation. तो इसको कहा जाता है implantation, which it leads to pregnancy. So this is all about the fertilization and implantation. तो हमने इसमें डिटेल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बारे में पढ़ा, ठीक है, जो ओवम का जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में पढ़ा. नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा, कैसे हो रहा है, और इम्प्लांटेशन, ओके इम्प्लांटेशन कैसे हो रहा है इसके बारे में हमने डिटेल पढ़ा. नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट द प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. थैंक यू.